Good evening, friends. May I now request Professor Joshi to please give the welcome remarks and address us and tell us about the rationale and objective of this seminar and of the book. Over to Professor Nirmala Joshi. Thank you. Thank you. On behalf of India Central Asia Foundation, I welcome you all. I extend a very warm and a hearty welcome to all. We are indeed very grateful to Vice Admiral Shekhar Sinha, a highly decorated and a distinguished naval officer, for graciously agreeing to give graciously accepting our invitation to deliver the keynote address. Thank you, sir, and welcome. We are equally grateful to Honorable Minister for State, Shri Bhupen Bhanu Prasad Bhanu Pratap Verma, for accepting our invitation to release the ICAF book. We are also very grateful to Shri Vinay Sahasrabuddhe, the President of Indian Council for Cultural Relations and a renowned scholar on culture. We once again extend a very warm welcome to you all, sir, and thank you for joining us. We are also grateful to their excellencies who have come here sparing their time. Sparing their time to be with us on this occasion. It is indeed very encouraging for us. We would also like to sincerely thank our foreign scholars. Unfortunately, they are not here. There has been some confusion about the cars and the drivers, and I hope they join us, but I hope they join us very soon, and we extend a very warm welcome to them. They have taken the trouble to travel all the way, long distances, and be with us. Their presence is indeed very encouraging. To share their perspectives. Your contribution would be beneficial to our understanding, and a very warm welcome once again to our foreign scholars. Finally, our gratitude to each one of you who has taken the trouble to be with us today, and your presence and support is indeed very valuable. Now, briefly about the seminar. The global order has changed and is changing very rapidly, bringing about fundamental shifts in the geopolitical situation. In the West, Europe has emerged as a strong, unified entity, geopolitical entity. NATO is also expanding. Russia is under sanctions. In the East, intense tensions exist between China and the US in the Indo-Pacific region over the issue of sovereignty. Naval bases are springing up in the Indo-Pacific region. Central Asia is caught between these two conflict zones. In the west is Russia, in the east is China. Importantly, both Russia and China, both leading powers
in Eurasia flanks Central Asia. Sub- Flank Central Asia. Importantly, they have to report. Media reports suggest that there is a sense of unease in the Central Asian countries. Whether that is true remains to be examined. Another development which has to be taken into account is the strengthening of the Russia-China strategic friendship. Now, how this strategic friendship will impact on Central Asia is a moot point. It cannot be decided at this point at all. Is how well this strengthened partnership will impact. At the economic level, the Central Asian states are very keen to engage with countries in the southern direction in trade and transit. However, their landlocked status is a huge challenge. At the regional level, the issues that are flagging or that are bothered are regional cooperation, seeking solutions to transboundary rivers, and securing high technology. India has deep interest in the stability and security of the region. In its strategic uh, neighborhood, Indian policy is and diplomacy is proactive, and at the strategic level, political, economic levels, it is also active. It is keen to revive the age-old cultural heritage of India uh, between India and the Central Asia. It is of utmost importance to understand the evolving processes by discussing and debating with research scholars and understand diverse views of the problem and aspects. It is necessary for foreign policy makers and diplomats. It could become a major input into the policy making. It is from this perspective that the India Central Asia Foundation has organized uh, this international seminar, Understanding Central Asian Perspectives on Eurasia. Thank you. May I now request Admiral Shekhar Sena, you want to go there, to deliver his keynote address. Namaskar, Jai Hind. Honorable Minister of State for MSME, Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Honorable Dr. Vinay Sahasrabudhe, President ICCR and my senior guide at India Foundation, the ICAF office bearers, Professor Nirmala Joshi ji, my teacher, Mr. Sandeep Lal, dear friend, distinguished participants, and excellencies. Thank you for inviting me to make this keynote address, ma'am, at this very important geopolitical juncture which you just mentioned in your opening remarks, when the whole world seems to be, in some state of, shall I say, disorder, if not order. Nirmala ji has been very brave to invite a naval officer to make a keynote address on a landlocked set of countries. But I think she has taken a hint from
my participation in Mazar-e-Sharif in Afghanistan, along with the Central Asian representatives, where I had mentioned that Central Asia is landlocked, you are not very fond of sea route. So let an Indian admiral bring the sea close to you. And we were talking about Chabar at that time. So hopefully, the sea route was one of the things that you mentioned. And what I'll do is I'll start with some positive notes, and I'm sure that the next 2 days are going to be very, shall I say, intense discussion. So let me try and highlight the good parts, the economic indicators of the Central Asia, which can give us an idea as to why it is so important to engage with CAR. Whether it is by the Eurasian countries or purely by Asia, it has a lot of development potential and prospects for future competition. One of the analysis I read, I've just noted down a few figures. I'm not going to bore you with large numbers, but let me just give you a few of them. It's an EDB analysis, the 2021 and 22 data. The aggregate GDP of these 5 countries is about $347 billion. In last 2 decades, it has grown 7 times. Population has increased by 77 million, which is a factor of 1.4. It has expanding pool of labor resources. Current age distribution points to future growth of labor resources even further. Average annual growth rate of GDP has been recorded at 6.2%, whereas the developing countries' growth rate has been 5.3. So there is a lot of potential. Then why are we discussing this, and why Professor Nirmalaji has brought out so many points? Just to flag those issues so that we know that what discussion is likely to take place. There are structural challenges. So that is one set of challenges. Lack of access to sea, and as I said, that's why I'm here. The resource dependence and low level of development of financial sector. This is a big hurdle. Lack of coordination in the management of water and energy complexes. And lastly, the climate change. It's really impacting that area quite a lot. But it is not unsurmountable. Elimination of infrastructure bottlenecks will lead to economic productivity, trade and commerce partnerships with near neighbors and far neighbors. And you will see diversification of the products, export, import, etc. Right now it is centralized, where all it is centralized. If you look at the map, you will get to know. But the bigger problems, which is the dilemma in which these Central Asian countries are, I really don't know, because the subject is understanding Central Asian perspective of Eurasia. But as an Indian think tanker, I would think that this is what the Eurasian perspective, the Central Asian perspective should be. So pardon me for if I make any mistake, because I won't know how they are thinking. But if I were there or we were there, we would have thought in this manner. So what are these geopolitical hurdles? These 5 states, as we know, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan, are landlocked between very vast terrain. You've got mountains and marriage of mountains in that area. The terrain is very tough. So this is a vast terrain of Russia, China on the other side, India, surrounded by India, the West Asia, and these are very critical groups of states and economies that are shaping the the current economic order or disorder, whatever you call it. And they are the geographics help these 5 states through their thick and thin, through robust security ties. That's one country. Russia says that Kazakhstan and Uzbekistan have engaged in joint military effort on the Afghan border at the height of the Afghan crisis, and the troops are still there. So Russian troops are still there present, we all know, on these borders. But there are efforts by the US to revitalize the presence in the region to restrain the Sino-Russian alliance. So you have these 3 very independent set of constraints which are on the Central Asian republics, and I would say that not a very happy place to be. So
it's really hard work. How does Central Asia handle this situation, where historically Russian dominated regional economic and military sphere is now seems to be getting shadowed by China's expansionary ambition by offering an alternate Belt Road initiative. This at a time when US influence in the region has declined. States have harnessed their human capital and resources and uh, cultural issues, and they have cultivated the cultural issues to make sure that the ties of codependence, collaboration with both Russia and China should be on a very even keel. Russia is typically the security partner. We all know Collective Security Treaty Organization of these five, that Central Asian country. Even bilaterally, these states have a very strong military agreements. Unfortunately, the relative efficiency and absence of structural accountability among the democracies, and I dare say a little fraud, so to say, has been capitalized by China, as it always does. Wherever there is some weakness in your governance system, they will find the loopholes, they will use it, and then they will make you dependent. You can see 2, 3 examples in the neighborhood. So they have capitalized for trade and commerce partnerships. China is advancing its interest by means of SCO and BRI. Goes without saying. Russia views the Central Asian Republic through the lens of ideology because it's a part of the greater Soviet Empire, which can rejuvenate Moscow's desire to reunite the Eurasian vision and aspirations which have underpinned the Russian outlook on the geopolitical since the days of Tsar. So it goes back into history and things that, if we have not as one country but as one big unit, then they can have the very similar stature. For China, Xi Jinping access to Central Asia is very vital for securing its own internal security dilemma along the western borders, particularly Xinjiang. We all know that's a different subject by itself. One can have seminar on that. For China, opening passage for Silk Road trade is pivotal for realizing the big China dream. Mind you, it is also going to hinder the Russian trade, which is active right now in that area. And therefore, I'm just digressing a little bit. I don't think, to my mind, that this Russia-China bonhomie is going to last for very long. The moment the business interests conflict, there will be problems. Well, US has two self-imposed compulsions. Why is it self-imposed? It wants to be everywhere. Forging a stable backdrop against which its operation in Afghanistan could reoccur. Important. The CIA is still active. Second is court support of East European states through preserving the energy trade security in Central Asia. They want to become part of it. Few events point at keenness of some of the CR states to be on the good side of the US. I don't wish to name those countries. You think in the next 2 days we will discuss them. So, balancing of these competing interests through strategic ambiguity. Now, this is a very important word to remember. They are all playing strategic ambiguity. Don't say everything that you want to say, so that you can keep these big parts guessing. And that's a good way to play a game. It calls for delicate balancing, which has taken place, and I am sure our learned speakers will highlight this in their talk for next 2 days. Uzbekistan has remained away from Eurasian Economic Union and embraced BRI. So the capital role in Uzbekistan is quite a lot. On the other hand, Turkmenistan has remained away from most of the regional groupings, just doesn't want to participate. They have their good reason to. There is an effort to cultivate this regional sort of solidarity among these 5 countries, which is a good thing to happen. The momentum of this strengthening of regional cooperation has become visible after the first consultative meeting in Nur Sultan in 2018. Second one in Samarkand in 19, and third one was 2021 August in Turkmenistan. I'm not sure if the fourth one has taken place. It is to improve the development of inter-regional cooperation
across the socio-economic, political, cultural levels. Can they speak as a unified entity? Is the question which they have to answer. Thank you. I now request Dr. Ramakant Dwivedi to take up the next event. Thank you, ma'am. Namaste, everybody. Good evening, friends. Before I request Honorable Shahis Buddhaji and Honorable Minister to release the book, let me take few minutes to talk about the book, what is the rationale and objective for bringing out this edition, and how this edition is going to make value additions to the already existing literature on this theme. Broadly, there are four themes which have been covered in this book. First is related to the Indo-Kyrgyz relations in economic, cultural, political arenas. Second is related to the threats and challenges posed by the non-traditional forces, especially the affiliates of the ISIS. In this particular book, there is a paper which deals with the expansion of Islamic State of Khorasan province in terms of its spread of area and in terms of intensity of area where it has got maximum supports. And you may refer that there have been a group of people who have migrated to Afghanistan, primarily because of this kinds of people. What are the ideological and financial supply line for these groups, and how those ideological and financial supply line could be disrupted in order to stop such expansion of such forces. Third theme in the book is the changes which have taken place in Central Asia, especially after the takeover of Kabul by the Taliban. So, what are the trajectory of the emerging geopolitics in Central Asia, and how this geopolitics is going to impinge upon India's interest and stakes? What Admiral Sinha was referring, the perspective that we have to look every change from our perspective, that is the Indian perspective. And this book is an attempt to understand that the emerging geopolitics in Central Asia, how it is going to influence our interests and stakes in the region, and what could be the best methods to address this emerging geopolitics in the region. Whether we have succeeded in addressing these issues, we will wait for your critical assessment. Further details about the book I am not going to provide. Rajan Saab team is there outside, so you need to get a copy and read it. We will welcome your suggestions and we will work on it, and possibly work on another edition on the book which is dedicated to the Central Asian society, culture, politics, etc. Now I request Honorable Saish Buddhiji, President of the Indian Council of Culture Relations, and Honorable Minister Sri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Minister of State for MSME, Government of India, to kindly release the book. And may I now request our publisher, Rajan Arya ji, to please come on the dais. Thank you so much for bearing with us. Arya sir. Yes, sir. Now may I request Honorable Dr. Saish Buddhiji to kindly address us, sir. आज के इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के केंद्र में पुस्तक के लेखक और कूटनीति के बहुत बड़े जानकार डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी मेरे साथ बैठे हुए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लघु और सूक्ष्म उद्योग के राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, वाइस एडमिरल
शेखर सिन्हा जी, कार्यक्रम का संचालन करने वाली प्रोफेसर निर्मला जोशी जी और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों। मैं हिंदी में प्रारंभ इसलिए कर रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में हिंदी का बहुत बोलबाला है और अभी कुछ दिनों पहले जब मैं मॉस्को की यात्रा पर गया था तब जैसे कि हमारी पद्धति होती है कि वहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले इन लोगों को मिलने की हम कोशिश करते हैं। तो हिंदी भी हमारी ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग है और रूस में हिंदी पढ़ाने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में है, पढ़ने वाले भी है। तो वहां की एक लगभग 72 वर्षीय विदुषी जो हिंदी पढ़ा रही है विगत कई सालों से मॉस्को विश्वविद्यालय में, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा एक मैसेज लेकर आप जाइए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो हिंदी हम पढ़ाते हैं यहाँ पर वो आपके देश में बोली नहीं जाती। तो मैंने कहा ये कैसे होता है ये? तो बोले हम मुद्रास्फीति पढ़ाते हैं। भारत में अभी पत्रकारों को भी मुद्रास्फीति किस चीज का नाम है ये पता नहीं, वो तो महंगाई महंगाई बोलते हैं और इन दोनों में अंतर है। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा मैसेज है कि आपके माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद दीजिए क्योंकि चूंकि वो रूस में आकर भी हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी और रूस इन दोनों भाषाओं को जानने वाले जो इंटरप्रेटर्स है उनको काम मिला है, नहीं तो अब तक उनको काम नहीं मिलता था। अब हमारी हिंदी की कुछ इज्जत हो रही है। सो दैट इज द linguistic relation that this country, I mean Kyrgyzstan and the entire region, I would say, has been having with India for several decades. And therefore, at the outset, let me congratulate Ramakant Dwivedi ji for, and I am told that he has been working for last 2 years, I think, on this particular project, and getting so many authors together and making them write on the subject given to them, and in a particular structure is certainly not very easy, but I am happy he has been able to do that, and a new knowledge resource to gather insight about Indo-Kyrgyz relations is now available to the students of Eurasian studies particularly. Let me also mention over here that we are now in a globalized world, and therefore to not to know about a particular country, and especially in our extended neighborhood, I don't think we have that luxury today. We need to understand all our neighboring countries and all the countries in our extended neighborhood and try to also appreciate as to how Indian influence also has been there for several decades, I mean for centuries in fact, because such factors give us a sense of commonality of our approaches, of our cultural traits, so on and so forth. And therefore, we need to understand more about neighboring countries and countries in the extended neighborhood as well. And I believe this book certainly satisfies that requirement of developing some kind of an insight into Indo-Kyrgyz relations and various dimensions of it. So in a way, it's a timely publication which is now published over here. I think in the context of international relations, especially in the changing global order to which Vice Admiral Sinha has elaborately referred to, the centrality of Central Asia, I believe, cannot be undermined. Central Asia and the happenings over there, Central Asia and the impact of things that happen over there globally, what kind of influence it does have, requires to be understood. And in that context also, I believe this book has definitely contributed, I mean, it will be going to contribute
to the understanding of ours about Central Asia. I would also say that although I was very curious to know as to how many chapters are there about cultural relations. Yeah, but I was hoping that there would be many more chapters, and not simply because I represent the Indian Council for Cultural Relations, but because Central Asia and India have stronger cultural relations than perhaps any other geographical uh, block or any other region. And I have vivid memories of how, for example, when I had the opportunity of visiting Kazakhstan, when I visited the museum over there, I, I found that there are many things which are common to our heritage, our past, our civilizational history, and the civilizational history of Kazakhstan, for that matter. And in all these countries, one of the major, I would say, cultural linkage has taken shape via the Hindi movies, Indian cinema. And in Kazakhstan, in fact, many people told me that we love Hindi movies even today, but we would like them to be provided to us with Kazakh subtitles and not Russian subtitles. Now, here comes the importance of language friendship bridge, which we require to take care of. For example, in our country, and Vividiji was also telling me that we have only one single department where, university department, where Uzbek language is being taught, and that is in Jamia Millia. But we should have many more such departments. And I'm happy the Indian Council for Cultural Relations has now uh, applied its mind, and we are going to move towards building many more language friendship bridges with neighborhood languages and extended neighborhood languages, including Kazakh, Uzbek, even Kyrgyz for that matter, and Bhoti language, which was majorly spoken into Tibet, Bhutani as well, and the Burmese, Khmer, Thai, Sinhalese, Bhasa Indonesia, and Bhasa Malaysia. Unfortunately, all these languages, unfortunately, are ignored in our academic uh, setup over here. Whenever it comes to foreign languages, we normally focus upon French, German, Spanish, Japanese, or Mandarin for that matter. And I believe it is required that we should have many more talented and skilled interpreters and translators who can translate our literature into these languages and their literature into our language. So, in that context, also, I believe this book would underscore the need for developing such language bridges. More particularly, and there is a almost complete chapter here on the Kyrgyz epic of Manas. And I don't know what is the origin of Manas and what is the etymological kind of roots of it. But whatever the description that I came across in this chapter, contributed by Dr. Kadir Kulova AS, I think it's very insightful and it tells you. I'm just tempted to read just one paragraph so that we can perhaps appreciate the commonality of our epics, Ramayana, Mahabharata, and Manas, because both, in a way, tell us about human life and the fundamentals of it. And I'm quoting it. The notions of the epic about the culture of Kyrgyz are significant in relation to material culture, the types of dwellings, different types of clothing, equestrian equipment, food, etc. Its uniqueness highlights information of the epic on military activities, weapons, and military clothing. The epic Manas covers a wide range of information on spiritual culture, the totality of folk information, mostly folk medicine, myths, religious teachings, folk games, and amusements, musical instruments, etc. Now, I think all these things also are there in our Ramayana and Mahabharata, and therefore, perhaps it would be a worthwhile project to undertake some study
to gather insights into the content and the structure and commonalities between Indian epics and Kyrgyz epics. Perhaps I'm not a student of international relations that way, but I believe if we take the cultural context in consideration, perhaps this may serve some purpose. Another important suggestion which I wanted to make was, drawing inspiration from such projects. In fact, it is required that India and Kyrgyzstan should try and evolve more strong people-to-people relations. For example, there are parliamentary groups. Parliamentarians from one country and parliamentarians from other country, and parliamentary friendship group as what they call, but they require to be more galvanized. We have sister city arrangements in certain countries. Again, unfortunately, they are not paid due attention. But these are all things at the government level. At the popular level, if we can have some schools in India connecting with schools in Kyrgyzstan, colleges or universities in India connecting with colleges and universities in Kyrgyzstan, and thereby, and under the new education policy, national education policy, there are provisions for credit transfer and all such things. So I think there should not be a difficulty, because only with that, I believe, we can take international relations and the understanding of them at the popular level, which I believe is the need of the hour. Lastly, I would only say that when a particular volume is devoted to such bilateral relations here, India and Kyrgyzstan, it would be perhaps worthwhile to provide us at the end some kind of a roadmap how to go ahead. Because relations, international relations, bilateral relations have multiple dimensions. And what are those dimensions which need to be emphasizing more in the days to come in the larger interest of the global community requires to be underscored and presented, so that even the policy makers in the ministries, both in India and in Kyrgyzstan, perhaps may get some guideline as to what exactly would be more productive, would be more result oriented. I'm happy that when India is being discussed globally due to G20 and several other opportunities coming to us to lead the global community in a way, this book has come in true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you very much. Thank you, sir. Before I request the honorable ministers, welcome to the foreign guests who have just arrived, our guests from Central Asia. I request if Professor Kablukov is here, please come and, he is yet to arrive. Thank you very much, sir. And I'm grateful to you. We shall be working on these issues which you have flagged off today, and try to contribute in enhancing the bilateral relationship and regional cooperations with the Central Asian countries. Now, may I request Honorable Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Minister of State for MSME, Government of India, to kindly address us, sir. आज इंडिया सेंट्रल एशिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मेरे क्षेत्र में जन्मे डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी की एक पुस्तक इंडिया किर्गिज रिलेशंस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी के विमोचन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ICCR के
अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की मुख्य माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रोफेसर निर्मला जोशी जी और अतिथि के रूप में यहाँ भी उपस्थित हुए हैं कवरू कोपसी, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों। आज हम सब लोग डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी के इस पुस्तक के माध्यम से आज हम भारत और किर्गिज गणराज्य के मध्य संबंधों पर सभी बिंदुओं पर इस किताब में विस्तृत विवरण दिया गया है। क्योंकि मैं वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय का राज्य मंत्री हूं, तो विशेष रूप से मेरा ध्यान दोनों देशों की द्विपक्षीय व्यापार पर गया। इस पुस्तक के माध्यम से मुझे पता चला कि किर्गिस्तान में भारत का अधिकतर निर्यात वस्त्रों और दवाओं के रूप में हुआ है, जिनके निर्माण में परोक्ष अपरोक्ष रूप से देश की हजारों एमएसएमई कार्यरत हैं। इसके अलावा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में विस्तृत बातें बताई गई हैं, जिन्हें हम सब लोगों को विशेष रूप से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक के पढ़ने से जो दोनों देशों के संबंध है और 7 चैप्टर्स में दिए गए हैं, वो सभी की जानकारी इस पुस्तक के द्वारा प्राप्त होगी। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो विश्व में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अगर हम देखें कि विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था 2014-15 में हम लोग 10वें पायदान पे थे, लेकिन आज की स्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है, आज हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक विजन दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2025 तक हम देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। और देश भी बड़ी तेजी के साथ इस अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा है। अभी कुछ समय पूर्व मुझे उत्तर प्रदेश में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां एक समिट थी, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश ने एक लक्ष्य रखा था 15 लाख करोड़ का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा और बाहर की कंपनियां आके इन्वेस्ट करेंगी। लेकिन जब हम लोगों ने जाके वहां देखा, देश की जो स्थिति है, प्रदेश की जो स्थितियां हैं, 15 लाख करोड़ के इस उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उसको पार करते हुए करीब 33 लाख करोड़ रुपए का वहां इन्वेस्ट हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बड़ी तेजी के साथ हमारा देश बढ़ रहा है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी सारी जिम्मेदारी को बड़ा बखूबी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आप देखिए
जिस तरीके से 200 साल तक ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी के रूप में रखा था, आज वही ब्रिटेन में हमारे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के रूप में वहां काम कर रहा। आज देश की प्रगति देखिए कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। हम लोग समझ सकते हैं कि जब देश में हम लोगों ने जब से राजनीति शुरू की है, 1988 से मैं राजनीति में आया था, तब से लेके देखते देखते आज की स्थिति में जो 2014 और 15 में जो बदलाव मैं देख रहा हूं कि आज हमारे देश की 140 करोड़ जनता है और 2014 में प्रति व्यक्ति आय करीब 85,000 रुपए थी, लेकिन 2023 तक आते आते हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय 1,95,000 रुपए, मतलब दुगनी हो गई, दुगनी के करीब आगे बढ़ गई। इस तरीके से देश में बड़ी तेजी के साथ ये काम हो रहा है। मैं चूंकि एमएसएमई मंत्री हूं और मुझे बताना भी चाहिए कि हमारा एमएसएमई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और हमारे रिलेशनशिप है भारत के जो अन्य देशों के साथ, दूसरे देशों में हमारी एमएसएमई क्या कर रही है, उन्हें क्या एक्सपोर्ट कर रही है। आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर ही अंदर 6.3 करोड़ हमारी एमएसएमई काम कर रही है। उनमें करीब वो ये सारी की सारी एमएसएमई हमारे देश के 11 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे रही हैं, और साथ ही ये एमएसएमई जो 6.3 करोड़ है वो करीब 8,000 उत्पादों का उत्पादन कर रही है। अगर हम ये देखें कि हमारे देश की जीडीपी में हमारी एमएसएमई का योगदान क्या है, तो आज मैं कह सकता हूं कि देश की जो जीडीपी है उसमें 1/3 योगदान एमएसएमई का है। अगर एक्सपोर्ट में देखें, विदेशों में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, देश में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 48% एमएसएमई का योगदान है। इस तरीके से हमारी एमएसएमई बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है, और जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसकी के लिए ढेर सारी योजनाएं देकर समय रहते ही कोरोना काल में भी उसकी सहयोग करके किसी तरह से वो शिफ्ट ना हो, आज एमएसएमई बड़ी तेजी के साथ प्रगति कर रही है। आज 6.3 करोड़ एमएसएमई में करीब 96% एमएसएमई ग्रोथ कर रही है, बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में किस तरीके से हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें नहीं थी, न मास्क थे, न सैनिटाइजर थे, न वैक्सीन थी। हम लोग विदेश से मंगाते थे, लेकिन कोरोना काल के समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इन्हीं छोटी छोटी एमएसएमई से बात करके उनके पास जाके, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जब उन्हें आवश्यकता होती है तो बदलाव कर सकती है। जब बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, और मैन पावर को आपने देखा हो कोरोना काल में किस तरीके से लोग, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, अन्य बड़ी बड़ी जहां उद्योग नगरी थी, वहां से लोग उद्योग धंधों को छोड़कर घर भाग रहे थे, अपने को बचा रहे थे। लेकिन ये छोटी छोटी यूनिटें जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थी, उन्होंने छोटी छोटी चीजें बनाने का काम किया, उन्होंने वैक्सीन भी बनाने का काम किया, और उन्हें देश में ही आपूर्ति नहीं की, बल्कि 100 के करीब देशों को फ्री में मास्क और वैक्सीन देने का काम किया है। आज हम लोग कह सकते हैं उनकी संबंध की वजह से आज हमारा देश बड़ी तेजी के साथ आगे प्रगति कर रहा है। जैसा कि आदरणीय हमारे विनय सरस्वती जी ने कहा कि वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम सब लोग
आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं जब जिले में था तो गांव का कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता था तो हम लोग को प्रसन्नता होती थी, जब हमारे जिले का फलाने गांव का व्यक्ति है। जब मैं विधायक बनकर उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो अगर उस प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति या कहीं मिल जाता था तो हम लोग कहते थे अरे अरे ये हमारे जिले का व्यक्ति है, और हम लोग उसकी बड़ाई किया करते थे। लेकिन जब देश पर आ गए, देश में यहाँ आ गए, राजनीति करने लगे, तब कहीं कोई समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति बहुत प्रगति कर रहा है। और जब वैश्विक स्तर पर हम लोग सोचने लगते हैं, तब देश के लोग जब काम करते हैं, तब हम लोग को लगता है कि हमारे देश का ये व्यक्ति है, ये वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है और नाम कमा रहा है। आज हम लोग कह सकते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। मैं उस समय विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, मैं बनारस में था, और मुझे आदेश मिला कि आपको दिल्ली पहुंचकर रूस यूक्रेन का जो युद्ध प्रारंभ हो गया, यूक्रेन के बच्चे वहां से वापस आ रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर जाके आपको स्वागत करना है, किसी तरह से उसको उनका साहस बढ़ाना है। हम लोग रात के 2 बजे वहां पहुंच गए, उनका स्वागत करने लगे। स्वागत करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। जितने भी यूक्रेन से बच्चे आ रहे थे उन बॉर्डरों से निकल के, उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। हम लोग उनका स्वागत भी करते थे, फूल भी देते थे, लेकिन वो ले तो लेते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, वो आराम से निकल जाते थे। ये करते करते जब 8-10 दिन हो गए, उस समय जब लास्ट फ्लाइट पर लोग बच्चे आ रहे थे, क्योंकि मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया था, तो लास्ट फ्लाइट जो आ रही थी उसमें जो बच्चे आ रहे थे उन्हें जब हमने फूल दिए, हमारी टीम ने भी और सांसद हमारे साथ, मंत्री हमारे साथ थे, जब उन्हें फूल दिए तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने लिया, बड़े खुशी के साथ दिखाई दिए। तो हम लोग के मन में एक जिज्ञासा हुई कि जब वो पहली बार फ्लाइट आई थी, उसमें बच्चे उदास थे, चेहरे मुरझाए हुए थे, कोई चीज ले नहीं रहे थे, लेकिन ये लास्ट में जो फ्लाइट आई है, इसमें इसके बच्चे तो बड़ी प्रसन्नता से दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों से पूछा आखिर कारण क्या है, आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो उनका कहना था, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे हों तो देश आगे प्रगति करेगा, हम लोग निश्चित प्रसन्नता से दिखाई देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले रूस यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, हम लोग एक सप्ताह से तलगरे में डरे थे, 1 सप्ताह से सूरज नहीं देख पाए थे। लेकिन जब पता चला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दोनों राष्ट्र अध्यक्षों से बात करके और 8 घंटे के लिए युद्ध विराम कराया, और वहां के अधिकारियों ने कहा कि अब आप अपने देश को जा सकते हैं। 8 घंटे के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम करा दिया है। बोले मैं तलगरी से निकल के बाहर आया, तब कहीं सूरज देखा हम लोगों ने, और हम लोगों को लग रहा था किसी न किसी तरह से बहुत जल्दी बॉर्डर पार कर जाए, क्योंकि 8 घंटे का समय था। वहां कुछ बसें भी लगी हुई थी, लेकिन वहां के अधिकारियों का कहना था बेटे उसी बस में बैठना जिस बस में भारत का तिरंगा लगा हो, और बच्चे उसी तिरंगी बस में बैठे। लेकिन बसें कम होने की वजह से कुछ बच्चे पैदल भी चलना प्रारंभ हो गया, तो उन्हें लग रहा था किसी तरीके से, जिस तरह से कोरोना काल में आपने देखा होगा, यहाँ से लोग अपने गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही भाग रहे थे, अपने बच्चों को लिए, कोई साइकिल पे लिए, कोई अपना बैग कंधे पे ला दे, भाग रहा था कोरोना काल में अपने जीवन को बचाने के लिए। और वो अपने गांव बिहार और अन्य आगे तक भी, आसाम तक भाग रहे थे पैदल चलने। उसी तरीके से वहां के बच्चे भी जो वहां फंसे हुए थे, उन्हें लगा कि हमें समय मिला, वो पैदल ही भाग दिए। जब पैदल चलने लगे तो वहां के अधिकारियों ने कहा बेटे इस तरीके से मत भागो, अगर समय समाप्त हो गया, 8 घंटे के बाद बमबारी होने लगी तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तुम अपने ग्रुप में हो जाइए, और ग्रुप में होने के बाद भारत का तिरंगा अपने हाथ में ले लीजिएगा, और भारत का तिरंगा लेकर अगर आप चलोगे तो अगर समय भी समाप्त हो जाएगा, अगर बमबारी भी शुरू हो जाएगी, तो कोई भी बमबारी आपके आसपास नहीं होगी, इधर उधर होगी, क्योंकि आपके हाथ में भारत का तिरंगा होगा। बोले खुशी तो जब हुई जब हम
भारतवर्ष के ही बच्चे नहीं, अन्य देश के बच्चे हमारे साथ चल रहे थे। और उससे ज्यादा खुशी हमें जब हुई कि जब अन्य देशों के साथ साथ जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां के बच्चे भी भारत का तिरंगा हाथ में लिए और भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बोले मुझे उसकी प्रसन्नता है कि जो पड़ोसी देश आए दिन आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश के बच्चों को लोहनुआन करता है, निर्दोष लोगों की जान लेता है, आज उसके भी बच्चे भारत का तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब लगता है हम लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। आज कुछ समय पहले आपने टर्की में जो भूकंप आया था, अब टर्की से कोई अच्छे संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो पसंद कुटुंब की जो भावना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के उन्हें विश्व दिखाई दे रहा है, उनका विश्व पूरा परिवार है। उन्होंने कहा टर्की में जो भूकंप आया है, वहां जो आपदा आई है, उसमें हमें सहायता करना चाहिए। और उन्होंने अपने देश से एक एनडीआरएफ की टीम भेजी। वो एनडीआरएफ की टीम वहां गई, उसने काम किया। वहां के लोगों को लगता था कि हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं है, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपने यहाँ की एनडीआरएफ टीम भेज दी है। एनडीआरएफ टीम ने जब वहां काम किया, आप सब लोगों ने देखा हो जिस तरीके से वहां काम करते करते जो हमारे फौजी कुत्ते गए थे, वो बताते थे कि हाँ जिंदा व्यक्ति है, बच्चे हैं। जिस तरीके से उसमें बच्चा निकला और वहां की एक एसआई एनडीआरएफ में जो थी, उसने उस बच्चे को उठा के सीने से लगाया, तब विश्व ने देखा और सराहा ये भारतवर्ष है जिसके संबंध अच्छे नहीं है। वहां के एनडीआरएफ की टीम वहां के लोगों ने आकर टर्की में जाकर लोगों को बचाने का काम किया है। आज हम लोग कह सकते हैं जिस बच्चे को सीने से लगाया था, उसका जब इंटरव्यू प्रधानमंत्री के सामने हुआ, तो उसने कहा कि जब हम लोग शाम को बैठते थे तो वहां की महिलाएं, वहां के बुजुर्ग लोग कहते थे, टर्की के लोग कहते थे कि पहले तो हमारे अल्लाह है, लेकिन दूसरे आप हैं जिसने हमें मेरी जान बचाने का काम किया है। और आप समझ सकते हैं उस एसआई थी उसमें महिला विंग में, एनडीआरएफ में, वो और कहीं की नहीं थी। जहाँ के हमारे रमाकांत द्विवेदी जी हैं, उन्हीं के जिले की थी, मतलब मेरे जिले की। वहाँ के डीआईजी हमारे मनोज यादव हैं, वो उसे लीड कर रहे थे, वो भी हमारे जिले के हैं। अब आप समझ सकते हो कि विश्व लेवल पर जिस तरीके से इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इन सारे बिंदुओं को हम सबके बीच रखा है, और किस तरीके से भारत के रिलेशन अच्छे होना चाहिए। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी की इस सुंदर पुस्तक के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेष रूप से इनके वो आर्या जी हैं जिन्होंने इसे छापा है, सहयोग किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिनंदन। जय हिंद। Before I request my dear friend Sandeep Lal, whom I call Bobby, to extend vote of thanks, Excellency, ladies and gentlemen, may I request Anil Sharma ji to please present ICAF memento to Honorable Minister. नहीं I am requesting myself now to present.
I now request Professor Nirmala Joshi to present ICAP movement to Admiral Sinha Sahab. We are missing our dear friend Kabluko, who has played instrumental role in this joint study from the Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs of Kyrgyz Republic. But Bobby is still stuck up in the traffic. So now we proceed further, and I request now Sandeep Lalji to extend the vote of thanks, please. Very warm welcome to everybody present here today. Ladies and gentlemen, Honorable Shri Bhanu Pratap Singh Ji, Minister of State, MSME for the Government of India. Honorable Dr. Vinay Sahasrapute, President of the Indian Council of Cultural Relations. And our keynote speaker, Vice Admiral Shekhar Sinha. Thank you for your excellencies, ambassadors, and all the guests who are here and embassy representatives for taking time out to join us for this inauguration and for the seminar over the next 2 days. We would like to also thank Vice Admiral Shekhar Sinha for having set the tone for the seminar over the next 2 days. And thank you for all our guest speakers who have joined us from overseas to be a part of this August seminar. And thank you very much, and we hope it is successful. And please join us now for dinner and refreshments outside to your left. Thank you very much.